A lot of Pakistanis believe that way forward is entering into a regional alliance. They are looking towards China for CPAC. They're also looking for Russia because there is a common feeling that they can stand up to kind of dictations, forcing them to do something. Do you see some real form sort of alliance in this regard in this region? I think that that would be wise, unite, but unite not against anybody. Yeah. Unite, combine efforts in finding answers to problems. A lot of Pakistanis believe that way forward is entering into a regional alliance. They are looking towards China for CPAC, and they're also looking for Russia because China, Russia, then in this region, Iran, Pakistan, there is a common feeling that they can stand up to kind of dictations or kind of forcing them to do something. Do you see some real form of some sort of alliance in this regard in this region? I think that that would be wise to unite, but unite not against anybody. Yeah. But unite and combine efforts in finding answers to problems such as food security or energy security or the climate change or the COVID viruses. Yes, I think we should create different alliances and different formats of cooperation. But again, I would like to underline this. I don't think that it would be wise to direct our cooperations against anybody. So, and I would like also to underline that the policies of Russia is directed at the betterment of its own life. We don't put as a national goal to destroy some sovereign country. We don't, we defend our interests. We seek as a national priority the betterment of our own life. We do not seek to make others' life worse. But sometimes when you want to improve your life, automatically you are failing some other designs. Yeah, frustrate some others' hostile designs. Right. That's true, but that's this is not against, this is in protection of. Yes. The ambassador is very right in saying that when you protect your interests, maybe you are frustrating the other one at the same time, but actually you are trying to protect yourself. नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और जब वापस आते हैं तो फिर हमारे जो डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं अनवर अब्बास, इनको भी गुफ्तगू में शरीक करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट ये गुफ्तगू, रशिया पाकिस्तान को एक कम कीमत पर जो कि म्यूचुअल एग्रीड प्राइस है गंदम और तेल देने के लिए तैयार है और देखता है रशिया पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में बेहतर ताल्लुकात को। इसके अलावा जो इस खित्ते में जो डिक्टेशंस की कोशिश है, जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है, वो इस बात से भी इसको तस्लीम करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और अपने अपने जो मफादात हैं उसके लिए कौमों को मिलना चाहिए। यहाँ पर भी एक रीजनल अलायंस होना चाहिए, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ नहीं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहाँ तक ले जाऊँगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।